आ गए भाई, आ गए शशांक भाई, हम लोग आ गए। कैसे हो मेरे भाई? आप लोग देख रहे हो न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है। यूक्रेन वर्सेस रशिया का वॉर आगे बढ़ चुका है और आप देख रहे हो बहुत ही भयंकर हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में भी। रेसलर्स वहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे शशांक भाई रेसलर्स के लिए? मुझे लग रहा था कि आज भी बंक लगेगा आपका। अब आप बताओ, आपका क्या परेशानी है? दुख बताने से कम होता है। हाँ शशांक भाई, दुख बताने से ख़त्म होता है। मेरा दुख यही है कि यहाँ रेसलर्स धरने पे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए उनके लिए? आप देख रहे हो वहाँ पे जो हमारे लिए कॉमनवेल्थ और वहाँ पे मेडल जीत रहे हैं और वो रो रहे हैं यार। उनकी आंखों में आंसू है। क्या किया जाए बताओ? एनी सजेशन? उन लोगों का बोलना है कि जब तक वो गिरफ़्तार नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ धरना देना नहीं छोड़ेंगे। रेसलर्स को कैसे इंसाफ दिलाया जाए? ठीक है, आज उनके साथ हुआ है, कल को हमारे किसी के साथ होगा, तो कैसे उस चीज़ को ओवरकम किया जाए? बताओ बताओ बताओ, एनी सजेशन? ऐसे तो कोई सेफ नहीं है इस जगह में, है ना? एटलीस्ट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और उसके बाद जो भी मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो भी तहकीकात होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी। पर यहाँ पे लोग एफआईआर लिखने को ही राज़ी नहीं है। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। What was Robert saying? Now it's time to reflect. Ask yourself, what is Robert saying is in this quote? Why does he say that? In this section, you do not need to agree or disagree with Robert. The goal is to understand what Robert is saying. Remember, this curriculum is designed to be cooperative and supportive. Two minds are better than one. If you do not understand what Robert is saying, do not shy away from it. Ask for help in understanding. Take the time, discuss each quote until you understand it. My rich dad just played the game smart, and he did it through corporations. The biggest secret of the rich, the reality is that the rich are not taxed. समझ लो कि आप रिच से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इट्स द मिडिल क्लास हु पेज फॉर द पुअर। वो मिडिल क्लास होते हैं जो कि पुअर को पे करते हैं, स्पेशली द एजुकेटेड अपर इनकम मिडिल क्लास। Every time people try to punish the rich don't simply comply. They react. They have the money, power, and intent to change things. They don't just sit there and voluntarily pay more taxes. If you work for money, you give the power to your employer. If money works for you, you keep the power and control it. A person who understands the tax advantages and protections provided by corporations can get rich so much faster than someone who is an employee or a small business sole proprietor. It's like the difference between someone walking and someone flying. Employees earn and get taxed, and they try to live on what is left. A comparison earns, spends everything it can, and is taxed on anything that is left. It's one of the biggest legal tax loopholes that the rich use. Additional questions क्या कहते हैं? Now it's time to take the stories in this chapter along with the understanding of what Robert was saying and apply them to you and your life. Ask yourself the questions below, discuss with your study partner, be honest with yourself and your partner. If you do not like some of the answers you are giving, ask yourself if you are willing to change and accept the challenge to change your thoughts and mindset. भाई अभी भी बहुत लोग हैं जो रेसलर्स को गाली दे रहे हैं यार। अभी भी वो ब्रिजभूषण पर कई लोग आँख बंद करके विश्वास कर रहे हैं। पता नहीं यार। हाय सपना जमनानी जी, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। मेरी गलती है कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। वो कमीना खुद कबूल कर रहा है कि एक हत्या की है, 3 से 4 क्रिमिनल केस लगे हुए हैं उस पर। मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ यार। सही में ट्विटर पर सपोर्ट रेसलर्स कर रहा हूँ, व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने कांटेक्ट के लोगों को बताया, और क्या करूँगा। गुड शशांक भाई, अच्छा किया। बिल्कुल
जितने भी पोस्ट आ रहे हैं उनको रीपोस्ट करते हैं और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू अपनी तरफ से सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे और इसमें घुसे कि भाई कैसे हम लोग अपने प्लेयर्स को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, संभाल सकते हैं. Do you think members of the middle class and the poor realize that the burden of the taxes has fallen them? What the effect of that do you see? Do your beliefs fall more under the banner of capitalism or socialism? What are the benefits and downfall of each way of thinking? Are the rich right to use advantage of corporations to avoid taxes? Do you think more people could follow suit if they understood the system better? What are specific ways that you yourself could benefit from using our corporations for your assets? Term definitions 1031. Jargon for Section 1031 of Internal Revenue Code, which allows a seller to delay paying taxes on a piece of real estate that is sold for a capital gain through an exchange for more expensive pieces of the real estate. Corporations are a legal document that creates a legal body soul without a soul. It's not a building, a factory, or a group of people using it. The wealth of the rich is protected. Financial IQ, financial intelligence that comes as a result of financial education. People with high financial IQ learn to use other people's money to become rich. देखो जिसके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होगी वो लोग दूसरों का पैसा लगा के कैसे आगे बनना है, कैसे रिच बनना है उन्हें पता है. फाइनेंशियल लिटरेसी, द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच अलाउ यू टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एनी बिजनेस. अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी पता है तो आप किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के आप पता लगा लोगे किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है. ठीक है, ये चीज़ है. People with high financial IQ learn to use other people's money to become rich. Chapter 5, Lesson 5, The Rich Invent Money. अब हम लोग चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों. तो यहाँ पे हमारे साथ सपना जी हैं, हमारे साथ शशांक भाई जुड़े हुए हैं. अब कोई आता है नहीं, अमन भाई की कंसिस्टेंसी ख़राब है इसलिए. अमन जी भी शायद बिज़ी रहते होंगे इसलिए लाइव नहीं आते हैं. हाँ यार, पर मैंने अब ठीक है, आज मैं कह रहा हूँ कि अब मैं रेगुलर आऊँगा और इस किताब तक तो मैं पूरा रेगुलर रहूँगा. इस किताब को हम पूरा अच्छे से ख़त्म करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, देन उसके बाद नई किताब शुरू करेंगे. ठीक है. विशाल भाई तो फुल एंजॉय में है. हाँ विशाल भाई अभी घूमने गए हुए हैं. फुल विशाल भाई का ब्रेक चल रहा है भाई. अभी कम बैक करेंगे शशांक भाई, विशाल भाई कम बैक करेंगे, टेंशन मत लो. अभी छुट्टी पे हैं और थोड़ा छुट्टी में होना सबके लिए जायज़ है. और उसके बाद कम बैक करेंगे. पहाड़ी वादियों में हैं. हाँ भाई बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, मैंने देखी उनकी वीडियो. चैप्टर 5, द रिच इन्वेंट मनी. जो रिच हैं उन्होंने इन्वेंट किया है पैसा. Often in the real world, it's not the smart who get ahead, but the bold. Last night I took a break from writing and watched a TV program on the history of a young man named Alexander Graham Bell. Bell had just patented his telephone and was having growing pains because the demand for his new invention was so strong. Needing a bigger company, he then went to the giant at the time, Western Union, and asked them if they would buy his patent and his tiny company. He wanted $1 lakh for the whole package. The president of Western Union scoffed at him and turned him down, saying the price was ridiculous. The rest is history. A multi-billion-dollar industry emerged and AT&T was born. The evening news came on the right after the story of Alexander Graham Bell. On the news was the story of another downsizing at a local company. The workers were angry and complained that the company ownership was unfair. A terminated manager of about 45 years of age had his wife and two babies at the plant and was begging the guard to let him talk to the owners to ask if they would reconsider his termination. He had just bought a house and was afraid of losing it. The camera focused in on his pleading for all world to see.
Needless to say, it held my attention. I have been teaching professionally since 1984. It has been a great experience and a rewarding one. It is also a disturbing profession, for I have taught thousands of individuals and I see one thing in common in all of us, myself included. We all have tremendous potential and we all are blessed with gifts. Yet, one thing that holds all of us back is some degree of self doubt. It is not much the lack of technical information that hold us back, but more the lack of self confidence. Some are more affected than others. Once we leave school, most of us know that it is not no much a matter of college degrees and good grades that count. In the real world outside the academics, something more than just grade is required. I have heard it called many things: guts, Sutpa, balls, audacity, bravado, cunning, daring, tenacity, and brilliance. This factor, whatever it is, label ultimately decides one future much more than school grades too. अरे हाँ, मेंस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप भी चल रहा है. मैं जून के बाद रेगुलर आऊँगी लाइव पर. ओके सपना जी, गुड. मैं भी रेगुलर आऊँगा, आप लोग भी रेगुलर आएगा तो फिर मज़ा आएगा. हाँ अमन भाई, मेन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप चल रही है. आज डे 4 था. आज 4 मैच में से 3 मैच जीते. क्या बात है, शिव थापा हार गए ब्राज़ील से. ओहो. और कल से डायमंड लीग. हाँ तो कल से डायमंड लीग है. कल से जो रात को होने वाला है ना दोस्तों, वो हम लोग करेंगे और आपको बताएंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. Yet, as teacher, I recognized that it was excessive fear and self-doubt that were the greatest detractors of personal genius. It broke my heart to see students know the answers yet lack of courage to act on the answer. Often in the real world, it's not the smart who get ahead but the bold. जो स्मार्ट, आजकल की दुनिया में स्मार्ट लोग नहीं जाते हैं आगे, वही जाता है जो बोल्ड होता है, जो मुंह पे बोल देता चीज़ें. इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस योर फाइनेंशियल जीनियस रिक्वायर्स बोथ टेक्निकल नॉलेज एज वेल एज करेज. आजकल ज़िंदगी में सिर्फ नॉलेज नहीं, आपको करेज भी चाहिए दोस्तों. अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी. इफ़ फियर इज़ टू स्ट्रॉन्ग द जीनियस इज सरप्राइज. अगर डर ज़्यादा होगा तो जीनियस सरप्रेस कर जाता है, मतलब रुक जाता है. इन माई क्लास आई स्ट्रगल अर्ज स्टूडेंट टू लर्न टू टेक रिस्क, टू बी बोल्ड एंड टू लेट देयर जीनियस कन्वर्ट दैट फियर इनटू पावर एंड ब्रिलियंस. It works for some and just terrifies others. I have come to realize that for most people, when it comes to the subject of money, they would rather play it safe. I have had to feel questions such as, why take risks? Why should I bother developing my financial IQ? Why should I become financially literate? And I answer, just to have more options. There are huge changes ahead in the coming years. There will be more people just like the young inventor Alexander Graham Bell. There will be 100 people like Bill Gates and hugely success companies like Microsoft created every year all over the world. And there are also will be many more bankruptcies, layoffs and downsizing. So why brother developing your financial IQ? No one can answer that but you, yet I can tell you why I myself do it. I do it because it's the most exciting time to be alive. I would rather be welcoming change than trading. So guys, समय आ चुका है आप लोगों से अलविदा लेने का. कल हम इस चैप्टर 5 को ख़त्म करेंगे, ठीक है. और कल शाम को, मतलब रात को करीब करीब होगा डायमंड लीग का हमारे प्यारे नीरज चोपड़ा का मैच, और एल हाउस करके हमारे एक प्लेयर है, वो उनका भी मैच होगा. जो मैच होगा वो दिखाया जाएगा, स्कोर कार्ड के साथ कमेंट्री की जाएगी. तब तक के लिए बने रहिए पहाड़ी ब्रदर्स के साथ. कल डायमंड लीग की लाइव कमेंट्री होगी, 4 लोग दिखा रहा है. यस. बाय बाय, टेक केयर दोस्तों. Stay tuned.